दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग हब से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अबाउट द स्टॉक मार्केट, ये पहला चरण है। हम लोग 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। आज पहला चरण है। तो स्टॉक मार्केट जर्नी आप लोग जब शुरू करेंगे तो ये बहुत कुछ चीज आपको जानने में सुविधा होगा और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हम लोग पहले चलते हैं। Introduction: what is stock market? What are the share and stock, and why companies issue share, and why people invest? The stock market, equity market or share market, is the aggregation of buyers and sellers of the stocks, also called shares, which represent ownership claim on a business. Example for the later introduced: share private company. जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी अपना जो शेयर है वो शेयर करता है, वो एक्सचेंज में दे देता है फॉर पब्लिक को जो खरीदना या बेचना है। उसी हिसाब से ये एक प्लेटफॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक एक्सचेंज। इक्विटी, well, as of the security type, the stock market is one of the most vital component of free market economy. In the simple word, a stock market is a place where stock, bonds, options, and futures and commodities are traded. Buyers and sellers exchange trade together via platform. Buyers and seller अपना जो ट्रेड है वो एक प्लेटफॉर्म के जरिए इसको ट्रेड करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं ये प्लेटफॉर्म। एक्चुअल एक मंडे से फ्राइडे ये टोटल जो काम होता है ये मंडे से फ्राइडे 9 AM से 11:30 PM तक चलता है। What is the difference between share and stock? बहुत सारा आदमी ये गलतफहमी में होता है कि शेयर एंड स्टॉक एक साथ मिक्स करते हैं। ए शेयर इज द मोल प्राइस ऑफ दैट कंपनी। कोई एक कंपनी का अगर हम लोग कोई इक्विटी खरीदेंगे तो दैट इज कॉल्ड द शेयर। व्हेन यू बाय अ शेयर यू ओन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द कंपनी। आपने जब एक बाय करेंगे तो एक स्मॉल पार्ट कंपनी का, तो दैट इज कॉल्ड द शेयर। इफ अ कंपनी डज वेल, your value share can grow up and you may get dividend. Example, you buy 10 share of the TCS, you became the teeny owner of the TCS. अगर ये TCS का दाम ऊपर जाता है तो ये आपको फायदा देगा। Stock is collection of share of a company. It is the general word people use to talk about owner in the companies. I invest in a stock. I buy a share different company. That is stock के मतलब कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं है, 2-3 कंपनी का इन्वेस्ट में उसको स्टॉक कहते हैं। इन्वेस्टिंग इन द रिलायंस स्टॉक, टॉकिंग अबाउट कंपनी शेयर इन द जनरल। सिंपल डिफरेंस: शेयर वन प्राइस, स्टॉक है मेनी प्राइसेस। व्हाई कंपनी इशूज शेयर? Main reason: the company issues share to raise money, to grow the business faster, to share rise, to go public, to reward founder and the employee. ये 5 मेन रीजन है कि ये कंपनी अपना शेयर इशू करते हैं। Why people invest? People, ये कंपनी ने आप लोगों को क्यों इन्वेस्ट करेंगे? To earn profit, to get dividend or extra income, to become the part of the company owner, the part of the company, beat inflation for long-term wealth, achieve financial freedom. ये सभी कारण के कारण, ये सभी टॉपिक्स के कारण कोई पीपल ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज के बारे में। What is the exchange? The stock market exchange and the organized platform where people buy and sell shares
stock of the companies. It's act like the marketplace that contains the investor buyer and companies or others investor sellers. Simple idea. Think of it like a big regulated market. एक्चुअली एक्सचेंज का मतलब है एक बाजार इसको बोलते हैं। तो ये बाजार में शेयर कंपनी अपना शेयर जो है वो आईपीओ की तरह इधर डाल देते हैं और इधर बायर्स एंड सेलर एक्सचेंज ट्रेड ये प्लेटफॉर्म पे है। आई थिंक दैट like a big regulated market, companies listed share of their investor trade those share, price go up or go down actual demand and supply के कारण। that is the most important part कि ये डिमांड और सप्लाई के कारण मार्केट का जो प्राइस अप एंड डाउन होता है इसकी वजह से। कि फ्यूचर फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं? ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वेयर स्टॉक कैन बी ब्रॉड एंड सोल्ड इजीली। प्राइस डिस्कवरी जिसमें आपको प्राइस अच्छी तरह देखा जाएगा। लिक्विडिटी इन्वेस्टर कैन क्विक convert their share into cash by selling them. A regulation and transparency exchange follow the strict rules of the ensure the fair trading. इसके कारण दैट इज द की फंक्शन, ये स्टॉक एक्सचेंज का की फंक्शन है ये सब। Three exchange in India: Bombay Stock Exchange, that is called the Sensex; National Stock Exchange, that is called Nifty; and MCX, the Multi Commodity Exchange. About the Sensex, the BSE has been established 9 July 1875. The BSE, formerly known as the Bombay Stock Exchange Limited. ये पहले ये एक्चुअल 1875 9 जुलाई इसका फाउंडेशन हुआ था और ये फॉर्मली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है जो आज हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं। इसका फाउंडर है कटन मर्चेंट प्रेमचंद रायचंद। इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। The BSE, the sensitive index, it is the benchmark of the index of the Bombay Stock Exchange. BSE in the India, Bombay Stock is compared with 30 of the largest, most financially sound. That is the most important. ये 30 companies, largest, most financially sound and activity traded companies are across the key sector. ये लॉन्च हुआ है 1986। एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो पहले जाना जाता था मगर उसके बाद सेंसेक्स, ये सेंसेक्स 1986 में आया था और ये 300 स्टॉक एक माने मोस्ट लार्जेस्ट एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनी लेकर इसको जो इंडेक्स बनता है दैट इज कॉल्ड द सेंसेक्स। Usually overall performance, sentiments, and trade of the Indian Stock Exchange. Key aspect of the Sensex composition: the represent 30 established company listed on BSE, designed to the reflect of the health of the broader economy. Calculation: it is used free floating market capitalization methodology, meaning the market value methodology, meaning the market value of the share available for the trading of the calculator। एक्चुअली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके हिसाब से हमने तो पहले ही बोला दिया था कि लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया इसके जो स्टैब्लिश्ड है और जिसका फाइनेंशियली कैपिटलाइजेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, साउंडेड कंपनी है, वही BSE 30 में है। तो BSE 30 का मतलब वो जो 30 कंपनी है वो 30 कंपनी अगर ऊपर उठता है तो सेंसेक्स ऊपर होता है और 30 कंपनी नीचे गिरता है तो सेंसेक्स नीचे गिरता है। पर्पस: इट इज हेल्प टू इन्वेस्टर एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग, monitor the market trend, market investment decision and understand market sentiment. Origin: funded by the stock market analysis Deepak Mohini in 1989. It is the a sensitive and index that is called the Sensex.
ये 78 ईयर ऑफ द इंडेक्स यूज बेस ऑफ द ईयर 1878 और 79 इसमें हुआ था, और बेस वैल्यू उसका था तब 100 रुपीज। 100 रुपीज से ये सेंसेक्स शुरू हुआ है, आज तो बहुत ऊपर है। Census is often used to direct reflection of the Indian economy's performance. When these 30s companies perform well, the census rises. If they perform poorly, it's fail. About the Nifty. आज हम लोग अभी बात करेंगे निफ्टी के बारे में। The National Stock Exchange of the India is the leading stock exchange in India and the second largest in the world. NSE launched electrical speed-based trading in 1994. डेरिवेटिव ट्रेडिंग इसका स्टार्ट हुआ था 2000 में, which are the each first of the kind of India. NSE was founded in 1992 and started trading in 1994. However, both exchange follow same BSE and NSE दोनों ही exchange follow same trading nationalism, trading hours। जो ट्रेडिंग आवर्स होता है सुबह से शाम तक, सेटलमेंट प्रोसेस सभी सेम है। द निफ्टी कैसे, what is the Nifty? The Nifty is the major stock market index in India that represent the performance of the top 500। पहले हम लोगों का बीएससी में था 30, अभी है 50 500 largest company listed in the National Stock Exchange। Simple explanation, think of the Nifty as report card Indian biggest companies। It is most these companies are doing well। Nifty goes up if the perform poorly, Nifty goes down। Actually ये 50 कंपनी जो इंडियन लार्जेस्ट कंपनी है, इसके ऊपर ही निफ्टी का उठाव चढ़ाव चलता है। अगर वो कंपनी सब परफॉर्म वेल करेंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा, परफॉर्म खराब करेंगे तो निफ्टी नीचे जाएगा। Who manage it? Who manage it? इसको कौन मैनेज करता है? The Nifty is managed by the NSE indices, which is part of the NSE group। Why it matters? इसमें भी इन्वेस्टर को हेल्प होता है अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड, यूज द बेंचमार्क ऑफ द म्यूचुअल फंड बेसिस ट्रेडिंग प्रोडक्ट लाइक इंडेक्स एंड ईटीएफ। द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ द इंडिया लिमिटेड। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ द इंडिया लिमिटेड, Multi Commodity Exchange of the India Limited, Indian first listed exchange, is the state-of-art commodity derivative exchange that facilitates online trading of the commodity derivative transaction, thereby providing a platform for price discovery and risk management। देखिए एमसीएक्स एक ऐसे काम है और एक्सचेंज है जहां इंडियन फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज इन द स्टेट ऑफ द आर्ट कमोडिटी डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट है ये एमसीएक्स में होता है, और कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन दे आर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म प्राइस डिस्कवरी एंड रिस्क मैनेजमेंट। द एक्सचेंज व्हिच स्टार्टेड ऑपरेशन नवंबर 2003। नवंबर 2003 में ये एनएससी का ऑपरेशन शुरू हुआ है, ऑपरेटेड अंडर रेगुलेटरी सेबी का अंडर में ये होता है। सेबी क्या है ये सब तो हम लोग बाद में देखेंगे। MCX exchange, state of the multi-commodity exchange of the India, it is one of the largest platform for trading commodity like metal, energy and agriculture product। इसमें metal, energy and agriculture product होता है। MCX is electrically marketplace। Electrically marketplace where people buy and sell commodity future contract instead of the physical good। Physical good के छोड़कर ये कैसे commodity में ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है। डेरिवेटिव पार्ट हम लोग बाद में हम लोग बोलेंगे आप लोगों को। तो दैट इज द ये डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होता है। थिंक ऑफ द लाइक स्टॉक मार्केट सच एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, बट इंस्टेड ऑफ द शेयर यू ट्रेड कमोडिटी लाइक। एक्चुअल कमोडिटी में जो होता है वो सब डेरिवेटिव में होता है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट बेस। इसमें क्या क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, कॉटन, ये सब। Who MCX works? Future trading. On the MCX, you don't usually buy actual gold or oil, you trade future contract। हमने
बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो डेरिवेटिव है ये इधर ट्रेड होता है, ये एक्चुअल गोल्ड और ऑयल ये ट्रेड नहीं होता है। Agreement buy and sell something at a future date of the fixed price. I think the gold price will rise. You buy gold future, contract together, the price increase, you make profit. If fall, you incur the loss. Margin system, you don't need full money to trade. You pay small percentage margin to control large contract. Price on the NCX change based on the global demand of the supply. International market like USA, China, currency value especially NRI versus USD, न्यूज इवेंट इसके ऊपर इसका जो प्राइस है इसका मूवमेंट करता है। Settlement, most traded exit before expiry, no delivery. Some contract will allow physically delivery होता है इधर। Who use MCX? Trader, profit from price change, investor, hedger or jeweler hedging gold price. Why MCX is important? Helps to price discovery, providing hedge tools, connect Indian market with global commodity price. MCX trading is risky because price moves quickly. Beginners should start with small capital, learn basic fast, use stop loss. Thank you. Thank you very much.